डायबिटिक फुट एक्चुअली क्या है? A lot of people will come to you and say that मुझे डायबिटिक फुट है. डायबिटिक फुट एक्चुअली आज की डेट में एक अलग ही कैटेगरी बन गई है जिसमें डायबिटिक पेशेंट्स में होने वाले पैर के बदलावों के बारे में बात की जाती है. ये पैर के बदलाव पैर की स्किन में हो सकते हैं, पैर की बोन्स में हो सकते हैं, नाखून में हो सकते हैं. अदरवाइज ये पैर के ऊपर के साइड या पैर के तलवों के साइड किसी भी तरफ हो सकते हैं. सो डायबिटिक फुट एक्चुअली इज अ कैटेगरी ऑफ चेंजेस that happens in the patients who are diabetic for a long time. Is it necessary that they are diabetic for a long time? No. They are diabetic for a short time also, but have had recurrent infections, or they are not taking care of their blood sugar levels. Diabetic foot can present in short duration diabetes also. Diabetic foot में आपके नाखून के infections, skin के infections, ब्लड फ्लो की कमी, हड्डियों के आर्क में चेंजेस, आपके पैर के प्रेशर में चेंजेस, पैर की स्किन में खुरदुरापन आ जाना, पैर के जो वेब स्पेसेस या उंगलियों के बीच के स्पेसेस हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाना, ये सब कुछ शामिल है. इसके अलावा कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है जब किसी और वजह से पैर में चोट लगने से या किसी और वजह से पैर में घाव बनता है और वो ठीक ना होने पे एक डायबिटिक फुट का शेप ले लेता है. इट टेक्स द शेप ऑफ डायबिटिक फुट. नाउ व्हाट शुड वी बी लुकिंग एट इन केस वी थिंक दैट वी आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम इन आवर फीट, स्पेशली व्हेन sugars are high or we have had any kind of infection otherwise? What you should be looking at is basically change in color, becoming very red or becoming very black, change in temperature, very hot or very cold, change in the texture of the skin, shiny skin, loss of hair on the skin. And then when you feel your feet, if there is any hard area that you can feel or area which is very soft, abnormally soft that you can feel, you have to get these checked. All these are early signs of diabetic foot. They may actually become very dangerous if they are neglected for long. One important question that is asked is every diabetic foot ulcer leading towards amputation? No. If treated well, diabetic foot ulcers can be healed, they can be cured, and the foot movement and function can be restored. But if you neglect them, then obviously they spread faster than normal patients and can actually lead to amputation. In diabetics, amputation starts usually from the toes. It always comes from distal to proximal, and if there is a small amputation that happens, it can lead to bigger amputations in almost 50% of cases in 5 years duration. Diabetic foot is a big problem because of the big diabetic population that India has and needs to be taken care by a specialist who understands the problem and can treat it properly with all the measures available.